Hello guys, welcome. I do not have anything to say for my intro today because I'm going to be talking about a very serious topic which I'm dealing myself. So, you need to be more responsible, and I will tell you why and how. So, I have this female dog living near my apartment, and she is very dear to me, and she gave birth to six puppies. One puppy was taken by someone. I don't know the reason, and which is good because that puppy would have gotten a home and she wouldn't have to live in the streets, you know, where there are dangers of getting killed. Hurt is the least of their concern. So, one puppy was taken by someone, and I hope that she is living the best of her life. Then, remaining five, two of the puppies died because a car ran over them. So now we have only three puppies left, and all the three are females. So one night I heard like they usually do it every day, but this one night they wouldn't stop like howling. And I went out to stop them, and I heard two girls, like my neighbor, come to me and they said that the third puppy, and she is named Kaju. So they came and they told me that a car has run over her. So I ran immediately towards her and saw that she was lying on the side of the road. Some guy had, you know, put her aside. So I asked the guy that, was it you? And he said no. Then I picked her up, brought her to my block, and put her down, clean her wounds to the best of my abilities. And then this guy, he told me that he could bring something to clean her wounds and cotton and some cloth. So I said fine. I had a look at her and I immediately knew that her bone was broken. And the bone, I think that it was the thigh, the bone in her thigh that was broken. So I didn't have anyone to call to, so I decided that I'll wait for the night, and the next day I will take her to the doctor. So the next day I, with my along with my friend, took her to the doctor, and he also said that her bone, hip bone, has been broken, and we cannot put plaster on a leg because the area is not apt. Like, we cannot put plaster on that area, so we'll have to put crepe bandage. Okay, so sorry guys, I had to take the puppy to get its dressing done, so you will see a gap. So he asked us to get crepe bandage because that is how we'll work to put her leg back together. But on the first day, he, like, her leg had swelled up like a big raisin, and he told us that he put some injections, and then he told that when the swelling comes down, you bring her back, and then we will put the bandage. So we thought that the swelling would go down in the evening, but it didn't. So we decided to take the puppy to the vet the next day. And I think my friend couldn't come the second time. So I took my mother, and we
saw like the swelling had gone down, and it was because of the swelling that we couldn't see what we saw. So we saw that in her inner thigh there were wounds, bruises, and cuts, and deep cuts. So yes, so the doctor worked on that. He gave her the injections that were required, and then did her dressing, put the crab bandage on, and we came back. And on the same day, there was another puppy. This, like I think female only, and I think my puppy and the puppy that I'm talking about were about the same age. So in her case, her like we were in the same room, so I got to know that her leg had almost gotten separated from her body, and she could have lost her leg. वो अपना लेग को लूज कर सकती थी, बट उसका वो पपी का सर्जरी हुआ, एंड फिर वो पपी का लेग सेव कर दिया था. I suddenly realized that I need to speak in Hindi because a lot of you say it to me. Okay. And I forgot to tell you that on the first night, the puppy Kaju was crying constantly. Like after every 5 minutes, I had to wake up from my bed and comfort her. Like she was in I don't know how much of pain. So I couldn't sleep. The next day, even though we, got her painkiller through injections, and her leg was bandaged a little bit, the next day also was like that. She was crying constantly. Now she like now I think it is the third, fourth day, I don't remember, but now I do not have to wake um that regularly, but I do have to wake because I think when she moves, it hurts her, so she cries. So I just can't stop. मुझे जाना पड़ता है उसको देखने के लिए, तो मेरी बीच बीच में नींद को मुझे तोड़ के उसको देखने जाना पड़ता है. ओके, सो वो पपी जो दूसरा था, उसका ऑलमोस्ट लेग अलग होने वाला था, एंड उसके लेग को सर्जरी करके बचाया गया था. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ पपी हु इज 2 or 3 months old, this small, and her leg had been sewed, and उसकी भी वो ड्रेसिंग करवाने डेली आना पड़ रहा था ऑब्वियसली, क्योंकि उसको इतना सीवियर इंजरी हुआ था. बट शी वॉज डूइंग फाइन. वो थोड़ा सा ड्रेसिंग में रोती थी. So again, back to Kaju. So again today we took her to vet and we did her dressing. तो अभी ड्रेसिंग खुल गया था, इसीलिए अगेन मुझे वापस से जाना पड़ा उसका ड्रेसिंग दिखवाने के लिए. एंड शी हैज बीन फाइन, लाइक शी इज फाइन नाउ, अभी ठीक है वो. और आज मैंने नोटिस किया कि वॉक भी कर रही है. ये था काजू का स्टोरी. बट आई हैव रियलाइज दैट ये सिर्फ काजू की स्टोरी नहीं है, ये हमारे इंडिया में बहुत से एनिमल्स की स्टोरी है, एंड स्पेशली एक्सीडेंटल. मैं जब काजू को लेके जाती हूँ हॉस्पिटल, तो मैं देखती हूँ कि डेली वहाँ सेम एक्सीडेंटल केस आते हैं. तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जब आप कॉलोनी में अपना गाड़ी को लेके जा रहे हैं, तो आप प्लीज़ लिमिट, जो स्पीड लिमिट रहती है उसको 20 करिए, 20-10 में रखिए. प्लीज़ आप तेज़ मत चला के जाया करें कॉलोनीज में. स्पेशली जब आप अपने गाड़ी को स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो स्टार्ट करने के पहले एक बार ये अपने दिमाग के ख्याल को अपने दिमाग में रखिए कि आपको अपनी गाड़ी के नीचे चेक करना है कि कोई एनिमल उसके नीचे है तो नहीं. क्योंकि अब तो हमारा विंटर कंप्लीट हो रहा है एंड समर आ रहा है, तो वो शेड के लिए यूजुअली गाड़ी के नीचे बैठते हैं. तो आप प्लीज़ थोड़ा केयरफुल रहिए.
थर्ड, अगर एक्सीडेंट हो गया है तो उसका अब कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि वो हो चुका है। द लीस्ट यू कैन डू इज, अगर वो एनिमल आपको दिख रहा है कि अभी आप सेव कर सकते हैं उसको, तो आप प्लीज उसको डॉक्टर को लेके जाइए, दिखवाइए। ये आपके अंदर खुद से आना चाहिए, यू शुड फील रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। मुझे समझ नहीं आता कि लोग कैसे छोड़ के चले जाते हैं। मतलब आप खुद उस जगह पे रहिए। अगर आपका एक्सीडेंट हुआ रहता, क्या आप नहीं सोचते कि कोई आपकी हेल्प करने आए? एंड यू, लाइक, इट इज द लीस्ट, सबसे कम काम है ये जो आप कर सकते हैं अगर आपसे कुछ ऐसा हो गया है तो आप ट्राई करिए कि अगर हो गया है तो आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाए। अगर वो जानवर सरवाइव ना किया है तो आप उसको बीच रोड में ना छोड़े, आप प्लीज उसको साइड में कर दीजिए। ठीक है, अगर बड़ा जानवर है जैसे कि गाय और बैल, तो एटलीस्ट आप किसी अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर दीजिए कि ऐसा ऐसा हो गया है, एंड दे विल डू इट। बट अगर कोई छोटा जानवर है तो ये बहुत कम है जो आप कर सकते हैं, आप उसको रोड के साइड में कर दीजिए। बट ये नौबत थोड़ी कम आएगी अगर आप अपनी गाड़ी की लिमिट को कम रखेंगे और आप गाड़ी चलाने से पहले एक बार चेक करेंगे कि कोई जानवर नीचे बैठा है कि नहीं। आपके ये करने से बहुत चेंज आ सकता है। आई होप मेरे इस वीडियो को बहुत लोग देखें और इन हैबिट्स को अडॉप्ट करें, बिकॉज इतना आपके लिए नहीं आपको फील होगा कि कुछ बड़ा काम है, बट वो जो जानवर होगा उसके लिए उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तो मेरा इस वीडियो के थ्रू आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप जो करना चाहें करें, बट थोड़ा केयरफुल रखें, ह्यूमैनिटी को रहने दें, इंसानियत आपके में नहीं मरनी चाहिए। और मैं अगर हो सके तो आपके लिए वो पपी का फोटो या कुछ होगा तो मैं इस मैं कहीं पे लगा के दिखाऊंगी। बट ऑब्वियसली अगर आई कांट प्रॉमिस, बिकॉज वो पपी को जब मैं लेके जाती हूँ तो मुझे उसको फुल अटेंशन देना पड़ता है। एंड मेरे साथ कोई ऐसा होता भी है तो यू नो ऐसा भी किसी को चोट लगा है तो यू कांट आस्क समवन क्या ओ आप इसका फोटो लीजिए, इसका वीडियो लीजिए, नहीं। तो इफ आई कैन डू इट आई विल पुट इट। बट इस वीडियो से मैं यही चाहती हूँ कि आप सब थोड़ा केयरफुल रहिए, थोड़ा वोक रहिए इन चीज़ों को लेके, एंड प्लीज 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 फॉलो दीज थिंग्स। थैंक यू। एंड मुझे थोड़ा डिले अगर होगा वीडियोस अपलोड करने में तो उसका रीज़न यही है कि अभी मेरा ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन वो पपी को जा रहा है। आई होप कि इस वीडियो से थोड़ा भी अगर चेंज आए लोगों में तो आए। थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।